So, hi computer guys, we are here for Canadian Constitution Law. Rajiv bhai and Razia and Amit, I need your eye contact. Kapil bhai, is it possible? Can you please turn on your camera? Kapil bhai. Khurram bhai, can you please turn on your camera? It's very benefit for you. So we are here, Razia, Rajiv, I need your eye contact. We are here for Canadian Constitution Law. Before I'm gonna teach Canadian Constitution Law, I'm gonna give you general idea about NCA, about barrister, and about solicitor. Rajiv bhai, I'm gonna give you general idea about NCA. Example, very first step from the zero, other than Constitution Law. First, you're gonna apply for NCA. First, you're gonna apply for Rajiv. Unmute yourself, please. First, you're gonna apply for NCA. NCA. So when you're gonna submit last document, whenever you're gonna submit last document, they're gonna take time at least 2 to 3 months. 3 months. 2 to 3 months. Maybe 2 months minimum, maximum 3 and more than 3 months. They're gonna time 3 months after the last document has been submitted. Okay, number one. Okay, number two, to clear NCA exam, they're gonna give you 6 subjects. For sure, they're gonna give you 6 subjects minimum. Canadian Constitution Law, Administrative Law, Criminal Law, Professional Responsibility, and Foundation Law. 5 subjects plus LRW. Okay, Constitution Law, Admin Law, Criminal Law, Professional Responsibility, Public Foundation Law, LRW, 6 subjects. To clear any exam, doesn't matter Consti, Admin, Criminal, PR, and Foundation Law, and LRW, you have to spend 100 hours. How many hours? You have to spend 100 hours. Deepika, is it possible? Can you please turn on your camera? It's good for you. It's good for you. So 600 hours. So to clear any exam, you have to spend 100 hours per subject. 100 hours per subject divided into 3 parts. 25 hours, I'm going to teach Constitution Law in live class. 25 hours, I'm going to teach Admin Law. 25 hours, I'm going to teach Criminal Law. Professional Responsibility, Rahul going to teach. Public Law, Rahul going to teach. LRW, no one going to teach. LRW, no one going to teach. So one subject, 100 hours. How to divide it? One subject's divided into 3 steps. 25 hours, I'm going to teach. 25 hours, you have to revise whatever I'm going to teach. Example, Canadian Constitution Law. Example, Canadian Constitution Law. There are 2 parts of Canadian Constitution Law. One is Constitution Law, Charter of Rights. One is Division of Power. Dhara. There are 2 parts of Canadian Constitution Law. One is Charter of Rights. One is Division of Power. So I'm going to teach 25 hours regarding Charter of Rights, regarding Division of Power. 25 hours. Whatever I'm going to teach after the class, you have to read on your own. Whatever I'm going to teach, for example, I'm going to teach, this is Charter of Rights, this is Division of Power. Example, 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to teach. After the class, you have to revise 1, 2, 3, 4, 5. 50 hours. If you're going to rely only on 50 hours, chances are you're going to pass Canadian Constitution Law 50%. 50% you're going to pass, 50% you will not going to. Make sense? Okay, again, I'm going to let you know there are 6 subjects: Constitution Law, Admin Law, Criminal Law, Professional Responsibility, Public Foundation Law, LRW. Consti, 100 hours. Admin, 100 hours. Criminal, 100 hours. Professional Responsibility, 100 hours. And
Public law, 100 hours, foundation law. So let's say constitutional law, 100 hours divided into, Razia, divided into Deepika, Khurram, Dhara, is it possible? आप कैमरा ऑन कर दें, आपको फायदा होगा. Honestly, I'm telling you. So 100 hours divided into, Rajiv? 100 hours divided into 3 parts. Three parts. 25 hours, I'm going to teach constitution law. 25 hours, I'm going to teach admin law. 25 hours, I'm going to teach Criminal. criminal law. So 25 hours teach Rahul each subject. So 25 hours, 1, 2, 3, 4, 5. Then you have to revise 1, 2, 3, 4, 5, 50 hours. If you're going to rely only on 50 hours, then next 50 hours research work is very important. If you're gonna next, for example, in constitution law, we're gonna read syllabus of NCA. So next 50 hours, we're gonna go into Google. We're gonna go into Google, write into Google, or this case law, read only case law. How to read the case law? I'm gonna teach. What is the benefit for next 50 hours? Understanding is very important. Understanding. You're gonna read next 50 hours, last 50 hours, you're gonna go into Google. Reading skill. Reading skill should be very important. Why reading skill is very important for okay, in NCA, reading skill is not so important. Not so important. To clear barrister and solicitor, reading skill is very important. You're gonna read how to read, how to I'll let you know. Okay, reading skill, reading. For example, there are cases where there are some cases cases we're gonna read from the Google. So what was a benefit? You're gonna understand reading skill is very important. What was a, if you're gonna rely on 100 hours, more than 80 to 90% chances you're gonna pass NCA within 6 months. So 25 hours, I'm going to teach 25 hours. You have to revise whatever I'm going to teach 50 hours. If you're going to rely only on 50 hours, 50% chances you're going to pass any exam. Next 50 hours, very important. What was the benefit of next 50 hours? Understanding would be very good. Research, because first of all, LRW, totally research work. Whole NCA is one side, LRW is one side. Whole NCA is one side, 5 subjects is one side, LRW is one side. What is LRW? Research work. Research work. If you are not good at research work, beside you're gonna done your whole 5 subjects, you're gonna stuck in LRW. LRW. In addition to LRW, you're gonna stuck in barrister and solicitor. Why you gonna stuck in barrister and solicitor? In Ontario, once you're gonna write barrister and solicitor, okay, in 6 months NCA is done. After the NCA is done, then you have to write in Ontario barrister and solicitor. First week of March barrister, third week of March solicitor. 2 different exams for barrister, and NCA is nothing. After the NCA, you have to qualify 2 more exams, which are, Rajiv, which are Barrister and solicitors. and solicitor. First week of March barrister, third week of March solicitor. Then first week of June barrister, third week of June solicitor. First week of November barrister, third week of November solicitor. 3 times in 1 year, barrister and solicitor. In barrister or solicitor, 160 hours in barrister and 160 hours in solicitor. Let's say, assume you're gonna write barrister exam, 160 hours. 160 question. 160 question. How many hours? 4 hours and 30 minutes. Objective. For example, barrister or solicitor. Oh, objective. You're gonna read question, reading. There are 4 options. You have to click one of them.
So you have to solve 160 question in 4 hours and 30 minutes. Mean one question, 1 minute, 30 seconds. Just imagine in barrister and solicitor, once you're gonna done your NCA, then you're gonna go for barrister or solicitor. Example, you are writing barrister exam. Oh, 160 question. Number one, time limit is 4 hours and 30 minutes. So per question, you have to spend 1 minute, maximum 30 seconds, even less than 1 minute, 30 seconds. Half page question, half page question. You're gonna read the question. If your reading skill is not good, how are you gonna understand the question? You understand my point? Razia, Kapil, Yes, sir. Rajiv, Suram, next 50 hours. What was the benefit of next 50 hours? Understanding is very important. For LRW, in addition to LRW, okay, barrister. Okay, you're gonna read the question, barrister. Okay, then there are 4 options. The point to be noted. Okay, so the point to be noted, if your reading skill is not good, beside you're gonna done NCA, you're gonna stuck in LRW, and 100% you're gonna stuck in barrister and solicitor. The point to be noted, आप यहां पे खड़े हैं ना, vision. What is a vision? First, I have done NCA, then barrister, then solicitor, then okay. Once again, come back. If you are a newly guy, you're gonna apply for NCA. They're gonna take 3 months. What gonna happen? 3 months. I have a recording lecture, live classes, recording lecture. Everything is available. Everything. You can watch my previous session, you can watch my live session. Previous session is the same, live session is the same. Okay, what will you do for the okay? So as soon as assessment is done after 3 months, example, assessment is done after 3 months, or assessment is done today. If assessment is done today, every month you can write every exam. So basically, consti, admin, criminal, PA, foundation, 5 plus LRW 1 month, 6 months. In 6 months, you're gonna done your NCA. 6 months. Okay. Then to clear barrister, 300 hours. To clear solicitor, again 300 hours. 600 hours. So 600 NCA, 600 barrister and solicitor, 1200 hours. So 1200 hours mean in 1 year, you're gonna done your NCA, barrister and solicitor. In 1 year. So 100 hours per month, 1 week, 25 hours. Right? 1200 hours, you're gonna done NCA, barrister, solicitor. Per month is 100 hours. 100 hours per month. How you gonna divide it? 1 week, 25 hours. Monday to Friday, you can spend only 2 hours. Monday to Friday, 10 hours. Saturday, Sunday, you can spend 5-6 hours. 5-6 hours. Never quit your job for NCA. Never quit your job for barrister. Never quit your job for solicitor. Make it very clear. A lot of people, I'm going to quit my job. No, no, no. Do your job. Doesn't matter part-time, doesn't matter full-time. Must continue your job. Doesn't matter Tim Horton, KFC, security, Uber, truck driving, anyone. Never quit your job. Make sense, Gurupreet? Yes, sir. क्योंकि वो फिर फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है. मैं आपको बता रहा हूं, हमें जॉब को कंटिन्यू करना है, उसके साथ एनसीए, डन बैरिस्टर, देन सॉलिसिटर. ओके, माय पर सब्जेक्ट फीस इज 400 plus HST per subject. You do not need to buy any book. You do not need to buy constitution law book. You do not need to buy administrative law book. You do not need to buy criminal law book. There are 3 criminal law books. Only you have to buy one book, criminal code. Criminal code. Which criminal code is best? Premier criminal code. This criminal code is best. 2021 and up. This criminal code. Okay. Then foundation, and you don't need to even buy those books.
only criminal code. Make sense? So once again, मैं आपको बता रहा हूं, once you gonna done your NCA, then you gonna done barrister, then you gonna done your solicitor. NCA per subject is, my fees is 400 plus HST. If you, we don't deal with LRW, only 5 subjects plus certain minimum 5 subjects. So 5 into 452, 2260, including tax, 2260. If you are my regular, okay, if you're gonna take deal, if you're gonna take deal gonna be in 19 something instead of 2016, 2060, 1920 plus minus. I think 1900 and 1920 instead of 2260. And in the deal until you are passed. If anyone gonna be fail in the exam, you can join my free of charge next class. We will not gonna charge twice until you are passed. If you're gonna defer the exam, no problem. Next time, until you are passed, we will not gonna charge twice. If you are my regular student, then you have to go into barrister. If you are our regular student barrister, we're gonna charge 1000 plus HST for solicitor, 1000 plus HST for solicitor. If you are our regular student, if you are not regular student, 1500 barrister, 1500 solicitor until you are passed. The point to be noted, example, plus minus 1920 with deal, plus 1000 barrister, 1000 solicitor, 2000, almost $4000 you're gonna spend only on NCA exam guru. You're gonna done your NCA barrister and solicitor, and you do not need to buy any book other than criminal code. Once you're gonna done barrister and solicitor, then free of charge classes, I'm gonna give you free classes. Once you're gonna done your barrister solicitor, you're gonna say, Aamer sir, we have no idea how to run my law office as a family lawyer. We'll give you 35-hour free classes from professional lawyer. 35-hour is privilege. It's not mandate. 99% chances last couple of years we are providing, but sometime never happens. Sometime 99% it's a privilege. We will provide. If somehow if we could not provide, it's not promise. But 99.9% last couple of years we always provide. So 35 hours family law free classes, 35 hours immigration classes, 35 hours real estate classes. Example, once you're gonna done NCA, barrister, solicitor, then I have to run my law office as a family lawyer. How to make a divorce application, practically aspects, how to give answer, financing statement, child support payment, child custody, spousal support, support, domestic contract, net family property, matrimonial home property. All these things are lawyer gonna teach you free of charge, 35 hours, practical aspects. Then if you are more interested for, again, you're gonna say, I have done my 35 hours for family. Now I need to understand immigration law. 35 hours free immigration law classes. Again, you are interested for real estate, how to make an offer, acceptance, ORIA form, everything we're gonna teach. These classes are free, but we will pay, we have to pay. तो ये कि आप मुझे if you're gonna give us $4000, honestly, family law classes is not available in market. Real estate classes are not available in market. Only immigration classes are available in the market, and they're gonna charge $10,000. इन क्लासेस का $10,000 वो चार्ज करते हैं. तो पॉइंट ये कि अगर आप मुझे $4000 देते हैं ना, एंड ऑफ द डे वो सारा का सारा आपको रिटर्न हो जाता है. अब आप कहेंगे यार मैं क्या कमाता हूँ, मैं टका कमाता हूँ. सिंपल आंसर. ठीक है, मुझे कमाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मैं आई लिव इन द बेसमेंट, माई एक्सपेंसेस आर वेरी लो. मैं कमाता जो माई स्टूडेंट है उनसे $1000 पर क्लास आफ्टर बैरिस्टर सॉलिसिटर, इमिग्रेशन, फैमिली, रियल एस्टेट. द पॉइंट हाउ इज गोना वर्क आउट. ठीक है राजीव, धारा, कैन यू हियर मी? दीपिका, कैन यू हियर मी? धारा, आप कैमरा ऑन कर सकती हैं? Yes, sir. You understand? Dipika, you got Yes, it? sir. Yeah, sir.
Actually, right now Again, I'm not at home. That's why. no Like, problem, no yeah, problem. yeah. अगेन अब देखो यार, आपने ना रिलीजियसली अपने प्रोफेशन को फॉलो करना है, रिलीजियसली, ठीक है। देखो, हमें इज नॉट बर्डन, इट्स अ प्रिविलेज। देखो यार, एक बात याद रखना, ये चीजें हमें लव करनी है। वी हैव टू लव विद आवर एजुकेशन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब 3 or 4 more minute I need. यार everyone can do it. If I can do it, you can do it. ठीक है। जब मैंने एनसीए स्टार्ट किया था, माई लेवल वॉज वेरी डाउन, वेरी डाउन, वेरी डाउन, यू हैव नो आइडिया। मेरी आप लोगों ने डिक्शनरी भी देखी होगी। नेक्स्ट क्लास आई एम गोना शो यू माई डिक्शनरी। नेक्स्ट क्लास व्हेन आई स्टार्ट माई एनसीए, माई लेवल वॉज -100। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज वेल। ओके, अगेन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। अभी से थिंक लाइक अ लॉयर, एक्ट लाइक अ लॉयर, बिहेव लाइक अ लॉयर। थिंक लाइक अ लॉयर, एक्ट लाइक अ लॉयर, बिहेव लाइक अ लॉयर। अपने काम से काम रखना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट 1 year 2 years आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलो, इफ यू कुड नॉट क्लियर इन 1 year, यू कैन क्लियर इन 2 years, अल्टीमेट यू कैन क्लियर। तो यह कि आफ्टर 2 years आपके लिए फ्री क्लासेस हैं, तो विद इन 5 years फ्रॉम नाउ आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर देना। हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जाम्पल, इन 6 months एनसीए डन, 6 months बैरिस्टर सॉलिसिटर डन, 1 year, लेट्स से वी कैन डन 2 years whole barrister solicitor. Example, we are dumb, fail, no problem. In 2 years, we gonna done barrister solicitor. We are lawyer after 2 years. Then next 3 years, we have to retire. रिटायरमेंट का ऐलान कर देना विद इन 5 years फ्रॉम नाउ। रिटायरमेंट का ऐलान क्या है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग $5,000 विद नॉन लॉयर, ये आपका लो लेवल का, सबसे जीरो लेवल। यू आर वर्किंग विद नॉन लॉयर, जो आजकल आप कर रहे हैं, आप प्रोफेशन से। You are making $5,000 with second step as a lawyer, working in legal fraternity with law firm as a lawyer, TD Bank, legal advisor, some law firm making $5,000, but as a lawyer, no comparison. Third step, which is a higher step, sole practitioner. You are making $5,000, but same time you are making a goodwill of $5,000. ठीक है, $5,000 plus goodwill of $5,000. Last step, which is a toppest step, which should be your last destination after 5 years, within 5 years from today, next 5 years, retirement ka elan, which is a fourth step. Why? I'm a lawyer, this is my law chamber, he is my family lawyer. Doesn't matter he's making $10,000, he's working for me Monday to Friday 9 to 5. You have to be their family lawyer, immigration lawyer, real estate clerk, and my manager. 5 people you gonna hire. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मेरे लोग कर रहे हैं इस तरह। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 5 years और आई एम डूइंग नथिंग, मेकिंग डजंट मैटर, $5,000 कमा रहे हैं, लेकिन डूइंग नथिंग। सिर्फ आप उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। सुबह सुबह आए 10 बजे, बेटा तेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है, 10 से 12 बजे तक आए, उनको एडवाइजेस दी घर बैठ के। वीक में कभी कभी आ गए, इंडिया चले गए, वापस आ गए, तो अपने मतलब आ ही रखनी है आपने। तो ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर 5 years कैसे पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका विजन होना चाहिए कि यार आफ्टर 5 years वेयर आई एम गोना स्टैंड। 5 years डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कैसे विजन होना चाहिए, अब मैं आपको लास्ट 4 o'clock आई एम गोना स्टार्ट। अब देखें, अब आप लॉयर बन गए हैं। अब आप लॉयर बन गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑफिस कैसी जगह पे, आपके पास कितने पैसे हैं, हैंड टू माउथ स्पेंड करें। मैं आपको बताऊंगा, बिजनेस वूमेन, बिजनेस आफ्टर बिकमिंग 2 years, आफ्टर डन योर 2 years, यू आर अ लॉयर, किस जगह ऑफिस खोलना है। अब आपका क्या होगा, पैसे हैं नहीं, ठीक है, पैसे आपके पास हैं, यू डोंट हैव अ मनी। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास मैन पावर है। मैन पावर क्या है, आपके पास वर्क है, पर यू कैन नॉट स्पेंड मनी टू हायर द एम्प्लॉयज। देखो ना, मैं टीचर हूं, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट आ जाएं, 10 लाख आ जाएं, मेरा टाइम उतना ही स्पेंड होता है। राइट गुरप्रीत, राइट? Yes, sir. मैं आप टीच कर रहा हूं, मेरी तरफ से 1 करोड़ आदमी आ जाए, आई डोंट इवन केयर, क्योंकि मेरा टाइम एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। आप जब लॉयर बनते हैं ना, आपका 2 क्लाइंट भी एक्स्ट्रा होते हैं ना, आपका होमवर्क बहुत बढ़ जाता है। यू नीड अ लेबर।
अब मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो कहते हैं कि हमें सिर्फ काम लर्न करना है। आफ्टर बिकमिंग अ लॉयर 3-4 मंथ हम वॉलंटरली बेसिस पे काम करेंगे, ताकि उस लॉ फॉर्म मैं आपको वो बंदे भेजूंगा आफ्टर 3 इयर्स 2 इयर्स, मैं आपके पास वो बंदे भेजूंगा एक्सपर्ट, क्योंकि आपको लेबर चाहिए ना, काम तो अब आपका आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप उसको उसका लालच किया होगा, वो लर्न करेगा, आपको फ्री की लेबर मिल जाएगी 3 to 4 मंथ। उसका बेनिफिट क्या है, वो लर्निंग कर रहा है, और आपका बेनिफिट आपको फ्री की लेबर मिल गई। आफ्टर 3 to 4 इयर्स, आफ्टर 3 to 4 मंथ, आप उसी बंदे को अगर अच्छा होगा तो आप उसको हायर कर लेंगे। लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कैसा है गुरप्रीत, कपिल भाई, राजीव, खुरम? मेक सेंस, डजंट मेक सेंस? Makes sense. ये देखो मैंने आपको पूरा आपको दे दिया है, पूरा आपको दे दिया है। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज इफ देयर इज अ वॉइस। तो मैंने देखो, once again we are here for Canadian constitution law. So Canadian constitution law, so 5 o'clock I'm going to finish this topic, only half an hour. There are 5 subjects, everyone going to have consti, admin, criminal, PR, foundation plus LRW. Okay, 600 hours. Okay, 600 hours, every subject's 100 hours, 25 hours I'm going to teach. If I'm going to teach 1 2 3 4 5, you have to revise up to 1 2 3 4 5, 50 hours. If you're going to rely only on 50 hours, chances 50% pass, 50% not to pass. Next 50 hours, research work. What was the benefit of research work? Go into Google, read the syllabus cases. I'm going to teach how to research work. I'm going to teach in live classes. उसका फायदा क्या होगा, LRW भी पास होगा फर्स्ट, इधर 50% से चांसेस से 80% चांसेस यू गोना पास, सेकंड LRW हाईली चांसेस यू गोना पास, देन बैरिस्टर सॉलिसिटर 100% योर रीडिंग स्किल गुड बी गुड, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसमें आपने अंडरस्टैंडिंग ही करनी है। टू क्लियर बैरिस्टर सॉलिसिटर स्पीकिंग नो प्रॉब्लम, listening no problem, zero speaking, zero listening, no problem, writing skill zero, no problem. Only problem is understanding. Read the question, understand, and click the answer. Otherwise, if your understanding is bad, quit right now. Yes? मैंने आपको बता दिया। देखें एनसीए आपका 1 ईयर में हो जाएगा, इफ नॉट 2 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स मैंने आपके लिए प्रोफेशनल क्लासेस का अरेंज किया है। लेबर आपको दूंगा, पढ़ी लिखी लेबर, उसका भी फायदा आपका भी फायदा, उसी को आप हायर कर देते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। नाउ कम बैक टू कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आई नीड योर आई कॉन्टैक्ट। धारा, देर आर टू पार्ट्स ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, देर आर टू पार्ट्स ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। वन इज चार्टर ऑफ राइट्स 1982, one is division of power 1867. You can write if you want, you can write if you want. So there are two parts of Canadian constitution law. One is Canadian Charter of Rights 1982. One is, Kapil bhai, one is Division of power. division of power 1867. 1867. Now I'm going to discuss Charter of Rights. Write it down. There are 6 sections, relevant sections, examination point of view. There are 6 sections. Write it down. 6 sections divided into 3 parts. There are 6 sections divided into 3 parts. The Canadian Constitution Law, Gurpreet. Yes, sir. The Canadian Constitution Law. There are 2 parts of Canadian Constitution Law. One is Charter of Rights and Division of Power. division. So Charter of Rights. Now Charter of Rights. How many sections for Charter of Rights? 6. Although more than 6, but relevant are 6. 6 divided into 3 parts. 3 parts. 3 parts. 3 parts. Write it down. One part. Write it down. Section 32. Highlight Section 32. Definition is whether charter apply to the body. Section 32, whether charter apply to the body. One part. One part
question. Okay. Then second part, 3 rights. 2A, freedom of religion. Write it down. Second part, 2A, freedom of religion. Write it down. 2A, freedom of religion. 2B, freedom of expression. Second part. Third section is section 7. Life, liberty, security. Third part, life, liberty, and life, liberty, security, and it has to be accordance with principle of fundamental justice. Okay. Second part, what is the first right? Second part, first right, Kapil bhai? Second part, 2A, freedom of religion. Then 2B, freedom of expression. Section 7, life, liberty, security, and it has to be in accordance with principle of fundamental. Then section 15. These are Charter of Rights. Section 15. Everyone is equal before the law. I will explain in detail. Section 15. So how many sections we have dealt right now? 6. Oh, 5. 5. Last section is third room. So there are 6 sections divided into 3 parts. First part, section 32, whether charter apply to the body. That's it. Second part, what right is going to be infringed? You can write what right. Maybe 2A is going to be infringed, freedom of religion. Maybe 2B, freedom of expression is going to be infringed. Maybe section 7, my life, my liberty, my security is going to be infringed. Maybe my section 15 is going to be infringed. Equal rights. Everyone is equal. Canadian government gonna deal with based on equality, not based on, they cannot make a discrimination based on color, religion, sex, greed, whatever, right? And last section is 6th, section 1. section Whether, first. write it down, whether law is justified under section 1, Oakes test. Section 1, Oakes test. Whether law is justified under section 1. So Canadian Charter of Rights, Canadian Constitution law divided into 2 parts. One, Canadian Charter of Rights 1982. Second is a Division of power. division of power. Now we are discussing Charter of Rights. There are 6 sections divided into 3 parts. One part, section 32, whether charter apply to the body. Second part, what right is going to be infringed? Maybe 2A, freedom of religion. Maybe 2B, freedom of expression. Maybe section 7, life, liberty, security. And it has to be in accordance with principle of fundamental justice. Section 15, equal rights. Last part, whether law is justified under section 1. Section 1 is, I will explain. ठीक है? ये है आपका structure. Whenever we're gonna read within the structure, we're gonna write into examination hall within the structure. Example. I need your eye contact. Example. How is gonna work out? So room number 1. Question can come from minimum 90% chances. Write it down. 90% chances. 90% chances. Section room number 1. 2 marks question. 90%. 10% chances can be 5 to 10 marks. Room number 1. And we need to know on what condition 90% chances is 2 marks question. 10% chances 5 to 10% marks. Okay, then room number 2, 30 marks question. 30 marks gonna come from room number 2. Every section, maybe 3 sections you have to deal with.
3 sections. Maybe in the exam, maybe 2A, you will be tested 2A, maybe 2B, maybe section 7, maybe section 15. If there are 3 sections, highly chances 3 sections gonna be tested. Every section would be how much marks? 30. Huh? 10 marks. 10 marks. Each section. If you're gonna deal with 2A, 10 marks. If you're gonna deal with 2B, 10 marks. If you're gonna deal with section 7, 10 marks. 30 marks done. Okay, then Oaks test. Minimum 20 marks. Minimum 20 marks. Right? So 2 marks, 30 marks, 32, 20 marks, 52. Okay, 52 to 60% marks gonna come from Charter of Rights. So Charter of Rights is heart and soul. Minimum 52 to 60% marks gonna come from Charter of Rights. Then division of power, 40%, 35%. I will explain. Okay. Then aboriginal is very important. Sometimes aboriginal can come. Okay, division of power can be 35 to 40. Okay, but sometimes 15 marks gonna come from aboriginal. Aboriginal is very important. Sometimes aboriginal can come 30 marks. Aboriginal can be 15 marks. Must be 15 marks. Must be 15 marks. Can be 30 marks or 25 marks or 20 marks. How it's gonna work out? Okay, once again, Canadian Constitution law, there are two parts of Canadian Constitution law. One is Charter of Rights, one is division of power. So we're gonna discuss only Charter of Rights now. Charter of Rights, there are 6 relevant sections, which is divided into 2 parts. First part, whether charter apply to the body. 2 marks question, highly chances. What right is going to be infringed? Can be 2A, can be 2B, can be 7, can be 15. Third step is the Crown prosecutor. Oh no. So whether law is justified under section 1. Okay. Write it down. You write it down for room number 1, 2A, and room number 1, section 32. Must watch my intro class from YouTube. At least first 2 hours or first 1 hour. You're gonna write into YouTube NCA Exam Guru in YouTube. NCA Exam Guru, GURU, NCA Exam Guru in YouTube. At least first 2 hours, even 4-hour lecture, 4 years ago, 4-hour lecture 4 years ago. मेरा कुछ वो चैनल किसी ने हैक कर दिया हुआ है, ठीक है ना? आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो भी मेहरबानी है, क्योंकि मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो पता नहीं, आपको पता है मेरे चाहने वाले तो बहुत है इस दुनिया में, जिन्होंने वो बग डालते रहते हैं। पता ना, जब आप कामयाब होते हैं तो फिर आपके चाहने वाले वो आपके ऊपर ना ऐसी हरकतें करते रहते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ आई नीड योर आई कॉन्टैक्ट। नाउ I'll give you one situation. I'll give you one situation. I strongly need your attention. यार मैं आपको एक और बात बताऊं. Some people always come in time with camera on. Highly chances they're gonna pass the exam. 90% chances. Some people camera on with punctuality. 90% people, 90% chances you're gonna pass. Behind the camera, 0% guarantee. Maybe you're gonna pass, maybe you're gonna fail. No guarantee. क्योंकि मुझे पता होता है, मैं आप लोगों की आंखों को वॉच कर रहा हूँ। मैं कपिल को भी देख रहा हूँ, गुरप्रीत को देख रहा हूँ, खुरम को देख रहा हूँ, राजीव को देख रहा हूँ, रजिया को देख रहा हूँ। आप लोगों की आंखें यूं यूं होती है तो मैं आपको पकड़ देता हूँ। ठीक है, अगर आप कभी क्वालिटी टाइम पे रन करना है, क्वांटिटी पे नहीं। 2 hours क्वालिटी टाइम इज मच बेटर देन 10 hours क्वांटिटी टाइम। बेशक 2 घंटे स्पेंड करें, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि बड़े लोग कैमरा बंद होता है, कॉफी भी पी रहे होते हैं, इधर उधर भी देख रहे होते हैं, उनको एक प्रेशर नहीं होता। क्लास का प्रेशर होना चाहिए, टीचर का एक प्रेशर होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से, अब जैसे दीपिका, बाजवा, धारा, इनको प्रेशर ही कोई नहीं है। इनको नहीं भी समझ कि ठीक है, वो इस वक्त प्रेशर नहीं आ रहा है इनको। अब मैं तो बार बार आपकी आंखों को देख रहा हूँ कि यार बताएं ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। देखें, दिस इज नॉट ओके। माई नेम इज आमिर चौधरी। This is not my part-time business. Teaching is not my part-time business.
This is not my full-time business. This is not my life. Teaching is my religion. मेरा religion है teaching. और I'm very 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 sensitive about my religion. बहुत सेंसिटिव हूं मैं रिलीजन के बारे में. मैंने हर चीज डिफाइन की हुई है. आप ये करेंगे ये रिजल्ट आएगा, ये करेंगे ये रिजल्ट आएगा, ये करेंगे ये रिजल्ट आएगा. आई डोंट इवन गिव अ डैम टू एनी मनी. और आपको पता होना चाहिए कि मैं मनी के पीछे भागने वाला बंदा नहीं. अब बड़े लोगों को पता है. इन नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी शो इसलिए करता हूं कि आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट गोना रन आफ्टर मनी, आई ऑलवेज रन आफ्टर माई रिलीजन. तो मुझे आपकी आई डोंट इवन केयर. आप मेरे से पढ़ें, आप मेरे से ना पढ़ें, आपको मेरी बातें अच्छी लगें, आपको मेरी बातें बुरी लगे, मैं आपको यहाँ पे हैप्पी करने के लिए नहीं आया. मैंने आपको सच बोलना है. सुन सकते हो तो मेरे से ज्वाइन कर दो, नहीं सुन सकते तो डोंट ज्वाइन. ये मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा ही हूं. और मैं 24/7 अवेलेबल. डजेंट मैटर यू गोना रिटेन माई सर्विसेज, you will not gonna retain my services. 24/7 you can give me a call. 24/7 I'm available. I'm not gonna ask you are my student, you are not my student. You can give me a call 100 times a day. Okay, I need eye contact. Okay, again, room 1, room number 2, room number 3. Now I'll give you exact situation. Exact situation. Okay. I need your eye contact. I need your eye contact. I'm a provincial representative. I'm a Provincial representative. provincial representative working for provincial government, Ontario government employee. Elections are going on. Elections are going on. Kapil bhai, who am I? Sir, officer, provincial. Officer. और क्या हो रहा है आजकल? Elections are going on. Elections are going on. Okay. Provincial election, MP, MPP. One lady came to my office for casting a vote. Casting a vote. So lady came to my office. Hey, madam, would you like to cast a vote? No problem. Can I see your ID? Can I see your ID. ID. मेरी फिल इन द ब्लैंक्स करना है. मैंने आपकी ये अट्रैक्टिव क्लास चाहिए मुझे. कपिल भाई, हु एम आई? Sir, provincial officer. Provincial officer. Lady came to my office for what purpose? वोटिंग के लिए आई है ना, वोट डालने के लिए. To cast a Vote. vote. To cast a vote. Casting a vote. हाँ, वोट डालने के लिए. मे बी जो भी पार्टीज है, मुझे तो पार्टीज का पता ही नहीं है, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी या लिबरल पार्टी और वट एवर. सो बीइंग अ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव, आई आस्क मैम, कैन यू सी योर आईडी? शी गोना शो मी द आईडी. What happened? That was a Muslim lady. That was a Muslim lady. she was covering her face. I said, ma'am, can you please uncover your face in order to vote? If you want to vote, I have to see your ID. You are the same person. So she said, hey, officer, I'm not going to uncover my face because my religion doesn't allow me to uncover your face in front of you, in front of the man. Ma'am, I agree. If you want to vote, you have to uncover your face. If you will not gonna uncover your face, then you don't vote. My job is you must uncover your face in order to vote. So she said, you know, officer, my rights are going to be infringed. My charter of rights are going to be infringed. I'm gonna take you to the court. No problem, ma'am. You can go to the court. That Muslim lady, she was very upset. She was very Upset. upset. She came to your office. These are fact pattern. You will see in the exam, you will see in the real picture. That Muslim lady, she was extremely upset. She came to your office. She came to your office. You are a constitutional lawyer. You have to write a memorandum for that nice lady. Exam start. Now,
Now, I am here behalf of the Muslim lady. I am here behalf of the Muslim lady. Muslim lady. Judge, defense lawyer, crown prosecutor. Okay. Judge, behalf of Muslim lady, crown prosecutor is here. No, यार crown prosecutor इधर ही होता है, real में भी इधर ही होता है, right side पे ही होता है. ठीक है? You got it? Where we are right now? In Court. court. Who Judge. is that? Judge. Who am I? Behalf of Crown defense lawyer, behalf of Muslim lady. Muslim. Who is she? Who is he? Crown. Crown. First question, room number 1, whether charter apply to the body. Yes. What is the name of the body? Provincial government. Provincial government. Issue, whether charter apply to the provincial government. Okay, you know what? Issue, rule, application, conclusion. In constitution law, there is a IRAC method. Issue, rule, application, conclusion. Room number 1, first step, issue, whether charter apply to the body. Body is a provincial government. provincial government. What is a rule? You must watch intro from my YouTube. Rule is, I pick up rule from, rule is like a Quran, Gita, Bible, Guru Granth. Rule is a rule. We cannot change. Can we change Gita? No. Can we change Guru Granth book? No. Can we change Quran? No. So rule is like a Gita, Bible. Rule applied into the application. Example, in Guru Granth book, we have to take the turban. We have to take beard. We have to take comb. We have to take necklace. We have to take a kirpan. 5 things. These are rule. Okay. For example, I'm sick. I have a turban. Oh, what is a rule? Rule should be in your mind. Oh, rule is a turban. I'm without turban. Violation of the rule. Okay. I have a beard. No violation of the rule. I have a comb. Comb is a rule. I have a comb. No violation of. I don't have necklace. Violation of the rule. I don't have any kirpan. Violation of the rule. How is gonna test it? Rule. So rule number 1, you must watch from my YouTube. Okay. Judge, defense lawyer, behalf of Muslim lady, crown prosecutor. Sir, first question, whether charter apply to provincial government, rule, you're gonna watch rule, application, conclusion. You're gonna watch my intro from YouTube. Then room number 2 is again for defense lawyer. Room number 2 is for defense lawyer. What right is going to be infringed? Issue, what right is going to be infringed? What right is going to be infringed in the given scenario? Right to religion. Right to religion, freedom of religion. We need to understand freedom of religion, not freedom of expression, not section 7, life, liberty, security, not section 15 rights. Example, I need your eye contact. Again, we are hiring police officer. Police officer. So lady came to my office. Okay, give me an application. Lady, you will become a police officer. Man, you also will become an officer. Same capacity, same everything. A lady will give you $50,000 per year. Man will give you $100,000 per year. So who will be discriminated? Women is being discriminated. Of course यार, इतना सोचा क्यों आपने मेरे बच्चे? बाजवा भाई, मैंने आपको कहीं देखा भी है? मैंने आपको कहाँ देखा यार? मुझे पुराने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. नहीं सर, फर्स्ट टाइम ही है सर. अच्छा, हाँ जी. देखो, we are hiring police officer.
Ma'am, you are ma'am. Girl, once you will hire, we'll give you $50,000 per year. Man, boy, we'll give you $1,000. So women are very upset. Women are very upset. She said violation of rights, room number 2. So now she came to your office. You have to write a memorandum for that nice lady. Now you're gonna go to the court. Now you are gonna go to the court behalf of that lady. So first question, whether charter apply to Body, The yes, body. sir. which body? Who is violating? Federal government, provincial The government, woman is Police is comes under. department. पुलिस डिपार्टमेंट मेरा बेटा, बॉडी तो पुलिस डिपार्टमेंट होगी ना. हाँ जी सर. पुलिस बोर्ड, पुलिस बोर्ड ही कर रहा है ना. कोई फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं ना कर रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं कर रही, सिटी भी नहीं कर रही, पुलिस बोर्ड. वेदर चार्टर अप्लाई टू द पुलिस बोर्ड. इशू रूल एप्लीकेशन कंक्लूजन. देन रूल नंबर 2, what right is Which? going to be infringed? Issue which right? Section 15. Section 15, based on Equality Equality. before law. इक्वालिटी राइट. सेक्शन 15. ऐसे हमें पता चलना है. मेक सेंस? Yes, sir. ओके, सेक्शन 15. तो ऐसे हमने डिफरेंशिएट करना है. ओ, हर राइट सेक्शन 15 इज गोइंग टू बी इन्फ्रिंज बिकॉज यू आर ट्रीट डिफरेंट देन द मैन. सेक्शन 15. ओके ओके. अब देखो, आई नीड योर आई कॉन्टैक्ट. कम बैक. अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना. मैं आपको बता रहा हूं यार, हमें वी हैव टू गो टू द टॉप. मैं आपको बता रहा हूं यार, रिलीजियसली फॉलो करो, रिलीजियसली. देखो, जीना तो शेर की तरह जीना है. मैं बताऊं, पूरा यार अटैक करता करो, खुप जाया करो उसके अंदर. ये नहीं कि दरम्यान में वो शीदा भी याद आ रहा है, बशीरा भी याद आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, अच्छा यार नींद आ रही है. तो यार पूरा विगोरियसली अटैक करना है. गो टू द रियल पिक्चर. मैं आपके साथ हूं. ओके, अगेन, मैन, यू विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर. Boy, you will become a police officer. Once you will hire, ma'am will give you how much money? 50,000. Okay, 50,000. So she was very upset. She said, "You know what? You are giving me 50,000 and you are giving him $100,000. You know, I'm a journalist. I'm gonna write into newspaper. Ma'am, if you're gonna write into newspaper, we'll arrest you. We will arrest you. If you will write into any newspaper, you will arrest. You will not gonna write. So उसके अलावा कौन सा right other than section 15, her right is also going to be infringed. Which right is going to be infringed? 2B, freedom of expression. ओ क्या बात है यार. 2B उसको हम रोक रहे हैं भाई. तूने 2B यूज. क्या बात है यार गुरप्रीत, तुझे सचिन तेंदुलकर ही बने हुए हो. Thank you, या sir. युवराज सिंह जिन्हें 6 छक्के मारे सी. ओ यार, वेरी नाइस यार. ऐसे ही किया करो. मैं जब एग्जाम लिखने जाता था ना, आई ट्रीट माई सेल्फ आई एम सचिन तेंदुलकर. जेड़ा गेंद करेगा 6 छक्के मारने, मुझे कुछ नजर नहीं आता. मैंने बस 6 छक्के मारने, दैट्स इट. बस छक्का ही मारना, भावें वसीम अकरम होए, भावें मैगरा होए, भावें मेलकम मार्शल होए. ओके, देखो अब मैंने उसको क्या कहा, इफ यू विल पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, वी गोना गिव यू, we arrest you. उसने कहा मेरा freedom of expression is also going to be infringed. Rule number 2, step point number 2, 2B, issue rule application conclusion. ऊपर से हमने उसको कहा कि तुझे हम अरेस्ट कर देंगे. तो कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है? Life, liberty, Life liberty. expression. लिबर्टी. Liberty. लिबर्टी जेल में डालेंगे तो लिबर्टी तो होगी ना उसकी. लाइफ को तो, लाइफ तो जेल में मोर सिक्योर है. Liberty. लिबर्टी, देखो लोग समझते हैं जेल में डालेंगे उसकी लाइफ. लाइफ तो जेल में ज्यादा सिक्योर है भाई. कोई फूड आगे पीछे हो गई, कोई कुछ हो गया तो जेलियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइफ इज मोर सिक्योर इन द जेल. अब देखो ना, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, कोई भी मुझे गोली मार के चला जाए, मैं जेल में कोई गोली नहीं मार के जा सकता. ये गारंटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Section वी हैव 7. मोर सिक्योर. तो तुम्हारी लिबर्टी इज आल्सो इन्फ्रिंज. अब देखो एक फैक्ट पैटर्न उस लड़की का
police officer ka 2B is also going to be infringed. Section 15 is also 15. going to be infringed. Section 7. Liberty is also going to be infringed. 30 marks question. कैसा है? अमित भाई सोच में पड़ गए हैं. अमित भाई एंजॉय. देखो अब अमित भाई की शक्ल देखें हैं, अब खुश हो रहे हैं, है ना? Actually, sir, नहीं, I don't have notes and anything to read. That's why I'm just listening. बट स्टिल आप खुश हो रहे हैं. I आपको समझ आ रही है तो खुश हो रहे हैं ना? yes, sir. Yes, sir. I'm enjoying. Yeah. हाँ. खुरम भाई ठीक है? खुरम भाई ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ. Yes, sir. अच्छा खुरम भाई Yes, sir. अगेन Okay. आई नीड योर आई कांटेक्ट. यार देखें मेरा, देखें फिर मैं आपको बोर नहीं कर रहा, हमें टॉप पे जाना है. अगेन आई नीड योर आई कांटेक्ट. There are two parts of Canadian constitution law, Khurram bhai. There are two parts of Canadian constitution law. One is, Khurram bhai, 1982 for Charter of Rights, proper answer. and the other is Division of Powers, Proper. 1867. Charter of Rights. One is the Charter of Rights. One is Division of Power. Division of Power. Second, we are discussing Charter of Rights. 6 sections divided into 3 parts. First part, we're going to go to the court, tell to the judge whether charter apply to the body. Body can be police department, body can be provincial government, body can be private body. For example, my name is Aamer Chaudhry. Gurleen, I'm not going to teach girl. Only I'm going to teach boys. Okay? No, no. I'm going to teach only girls. I'm going to teach only girls. I'm not going to teach boys at all. So boy, Khurram, what right is going to be infringe your right? Equality, equal rights. Section 15. Equality. I'm going to teach only girls, not boys. Your section 15, rule number 2, section 15 is going to be infringed. Now you're going to go to the court against me. So first question, whether charter applied to Body. To the body. which body? It's a federal government. Teacher. Huh? Education department. Teacher. Private body. Okay. Private body. मेरा private school है. मैं जिसको Okay. teach करूं ना करूं private body है. Okay. आपका बेसमेंट है, आप कहते मैंने सिर्फ मुसलमानों की देना खुरम भाई बेसमेंट. आपका बेसमेंट आप कहते ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो कर दी ना नॉन मुस्लिम के साथ. तो आपका घर कौन सा है? अब आप मुझे बेसमेंट में नहीं एंटर होने दे रहे बिकॉज आई एम नॉट अ मुस्लिम. देन आई एम गोना गो टू द कोर्ट वेदर चार्टर अप्लाई टू द प्राइवेट बॉडी बिकॉज यू आर रनिंग योर ओन प्राइवेट हाउस. आपने ठीक है. इसी तरह माई NCA एग्जाम गुरु इज अ प्राइवेट बॉडी. इट्स नॉट फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नॉट म्यूनिसिपैलिटी, नॉट हॉस्पिटल, नॉट यूनिवर्सिटी. यू मस्ट वॉच इंट्रो. अगेन कम बैक. आई नीड योर आई कॉन्टेक्ट. बोर तो नहीं कर रहा नहीं. यार? अपने देखो, मैं लगता नहीं मैं इंजॉय कर रहा हूं. अपने काम के साथ इंजॉय करो. जैसे ताल फिल्म में नहीं वो ऋषि कपूर कहता यार पैशन शौक दिल से निकालो. मतलब मेरा बस नहीं चल रहा, मैं आपके अंदर ड्रिल कर दूं. दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जो उसका प्रोफेशन, जो उसका पैशन, वही उसका प्रोफेशन. माई पैशन इज टीचिंग विच इज माई प्रोफेशन. तो आप थकते ही नहीं है. सारी रात मेरे से बुलवा लो, कैसे मैं थकूंगा? बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, थकते थे. पतंगे उड़ाते थे, बसंत याद है? फरवरी में बसंत होती थी, थकते थे. सारा उंगलियां खूनो खून हो जाती थी. याद है खुरम भाई? ये उंगली है, सारी उंगलियां खूनो खून. थकते थे? नहीं ना थकते थे, क्योंकि हमारा जुनून था पतंगे उड़ाना. तो पॉइंट ये है, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, साइकिलिंग करना, आवारागर्दी करना. तो आप अपने आप को ना पैशन, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका शौक नहीं भी ना तो उसको कैसे पैशन में कन्वर्ट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. एक एक चीज पे मैंने वर्कआउट किया है. एग्जाम्पल. ओके, अगेन कम बैक. आई नीड योर आई कॉन्टेक्ट. आई एम ए प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव. हु एम आई? Provincial representative. खुरम भाई अब मैंने आपसे पूछने हैं. हु Okay, एम sir. आई? Provincial representative.
Muslim lady came to my office for what purpose? For Voting. No, voting. only Khurram. For voting. Voting. I said, can I see your Khurram? Only Khurram. Can I see your ID. ID? Yes. After seeing your ID, ma'am, can you please uncover your face? Because you never know. Because I have to establish your ID. What she said, okay, you know what, sir? I'm not going to uncover my face in order to vote because my religion doesn't allow me to uncover your face in front of any man. And then Ma'am, then you have two options, either to vote. If you want to vote, uncover your face. If you don't want to vote, then leave. yes, She left my office and she said, now she left my office. She came to your office. Who you are? Constitutional From- lawyer. constitutional lawyer. Who you are? Constitutional lawyer. Constitutional lawyer. Think like a constitutional lawyer, act like a constitutional lawyer, behave like a constitutional lawyer. ऐसी की तैसी हमने constitutional lawyer ही बनना है. जो सब्जेक्ट पढ़े ना तो उसको कि मैंने इसकी ऐसी की तैसी फाड़ के रख देना. बनते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, वो लोग बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, ठोक के बनेंगे constitutional lawyer. You people are constitutional lawyer. Now I am also constitutional lawyer. Now I'm going to the court, judge, defense lawyer, crown prosecutor. Room number 1. First question, whether charter apply to forum, Provincial representative. provincial government. You must watch my lecture from YouTube. YouTube. Then what right is going to be infringed for Muslim lady? 2A, freedom of religion. Freedom of religion. So we're gonna tell to the judge, she is a Muslim lady. Her religion is an established religion. Of course, Islam, Sikh, Hindu, Christian is an established religion. Okay, established religion. Yes. And there was a nexus with religion. Okay. Nexus with religion ka write it down. Nexus with religion. First, established religion. First point, established religion. Second one is nexus with religion. What is nexus with religion? Some connectivity with religion. अब हिंदू तो नहीं कह सकता I have to covering a face. Okay, nexus with Sikh people have a turban. Nexus with religion. Sikh people have a kirpan. Nexus with religion. Muslim people, Muslim women covering a face is a nexus with religion. Some Jewish people, they don't accept other than the Jewish blood. Only Jewish blood is acceptable. Nexus with religion. First, we're gonna say this religion can be Hindu, Sikh, Muslim. Is an established religion. There was a nexus with the religion. Nexus with the religion mean covering a face at all time. There was a nexus with the religion. Third step is write it down. Third point. Sincere belief. Or fourth, unique to the claimant. Unique, it can be unique to the claimant. ये फोर्थ स्टेप आपने करने हैं. First, tell to the judge, Islam is an established religion. There was a nexus with religion. What is nexus with religion? Covering a face. Do not show to the other man. There was a nexus with religion. Number 3 is Sincere belief. Active belief. sincere. Okay, a sincere belief का मतलब है thousands of Muslim women are uncovering their face. They never cover their face. तो इसका मतलब ये है कि uncovering, वो कहते हैं we don't even care. I have a sincere belief. Thousands of women, they are uncovering their face. मुझे चेंज नहीं कर सकता. I have a sincere belief कि मैंने लेना है. बेशक thousands of women are not taking covering their face, but I have to take. उसकी रिस्पेक्ट करनी है. Make sense? 4 things we can establish with case law. There are case law. With case law,
I will explain. Case law हम पढ़ेंगे. Case law. Make sense? First, judge, I'm here behalf of Muslim women. Issue whether 2A is going to be infringed. Rule, cut, copy, paste. I picked up from Peter Hawk book. Rule, cut, copy, paste. Only cut, copy, paste. Tuck, 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 tuck. Application, rule apply into the application. What is application? Islam is an established religion. There was a nexus with religion. What is nexus with religion? Some connectivity. Sikh people nexus with religion. Turban nexus with religion. है ना? अब Jewish people, they only accept Jewish blood. Other than Jewish blood, they don't accept nexus with religion. ठीक है? It can be unique to the claimant. कहते हैं इसका मतलब है वो साथ ही केस लॉ डाल दिया. केस लॉ ये कहां पे एस्टेब्लिश हुआ है? I have a sincere belief on my religion. It can be unique to the claimant. देखो ना सब, अब देखो ना ये इतनी सी दाढ़ी रख ली, ये भी यूनिक ही है ना, है तो दाढ़ी. तो पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? माय रूम नंबर 2 इज डन. रूम नंबर 2 इज डन. 2 marks डन. 10 marks डन. माय जॉब इज डन. बाजवा साहब, गॉट इट? Yes, sir. I need your eye contact again from the start. I'm a provincial representative, right? Yes, sir. I'm a provincial representative. Who Yes, came sir. to my office? Bajwa sir, who came to my office? Sir, a Muslim lady. Muslim lady. I asked for ID. Her identity. ID. So, ma'am, can you please uncover your face in order to vote? Yes. She denied my request. Then I said, ma'am, you have two options. Either to vote. If you want to vote, you have to uncover your face. Otherwise, don't vote. She said, I'm going to see you in the court because of violation of my Charter of Rights. Yes, sir. Charter of Rights. Constitutional violation. So now she was very upset. She came to your office because you are a constitutional lawyer. That lady is not a constitutional lawyer. These fact patterns you will see in the exam. Then exam start. First question, judge, back of the mind, judge, back of the mind, I'm a defense lawyer, back of the mind, he's a crown prosecutor. First question, whether charter, Bajwa sahab, whether charter apply to? Sir, provisional representative. Provincial government, not representative. गवर्नमेंट मैं तो मेरा क्या औकात है, मैं तो एम्प्लॉई हूँ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव. तो मतलब वेदर चार्टर अप्लाई टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ है तो मैंने उनकी गाइडलाइन को फॉलो करना. भाई मैं कोई बदमाश थोड़ा, या कोई साड़ा मुल्क थोड़ा जो मर्जी गवर्नमेंट कहती रहे ऐसी फाइल लाना है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है तो मैंने उसी को फॉलो करना है ना, क्या नहीं? तो वेदर चार्टर अप्लाई टू गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट. मुझे नहीं फॉलो करना, मैं तो भाई एम्प्लॉई हूँ. मैनू की कहते हो? उन्होंने कहा कि भाई एस्टैब्लिश करनी है तो मैंने करनी है. तो भाई वो लॉ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया मैडम. मैंने लॉ नहीं बनाया, मेरे से ना लड़ाई लो. मैं तो खुद बड़ा पक्का मुस्लिम हूँ, तो मैं तो खुद इस लॉ के अगेंस्ट हूँ. तो भाई मेरा कसूर नहीं है. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस. तो बट मेरी ड्यूटी है, यू हैव टू अनकवर योर फेस. Whether so that first whether charter room number 1, then what right is going to be infringed? Sir, section 2A. To freedom of religion. Issue Freedom whether of 2A is going Question, to be madam. whether 2A is going to be infringed. Rule cut copy paste. In you're gonna see in my IRAC application. In application, Islam is the established religion. There Yes. was a nexus with religion. She will not gonna Sincere belief. uncover her face in order to vote because Islam doesn't allow to that lady to है जो भी है, ठीक है? Or it can be unique to the claimant, and she has a very sincere belief in their religion. Conclusion: my 2A is going to be infringed. Issue, rule, application, conclusion: my 2A is going to be infringed. Thank you very much, Your Honor. Conclusion: my 2A is going to be infringed. My job is done. Then it's gonna start room number 3. What is the room number 3? Crown prosecutor room. Crown Prosecutor. prosecutor. Now think like a crown prosecutor.
Now, room number 3, we are Crown Prosecutor. There are 4 steps. Write it down. Write it down. Sufficient important objective, write it down. Room number 3, write it down. Sufficient important objective. Rational connection between the second step. Rational connection between the objective and the discrimination. Yes, Khurram bhai, first was Sufficient important objective. second. Rational connection between objective and discrimination. And the discrimination. Third one is a minimum impairment. Minimum impairment. These are rules. Minimum impairment or least drastic mean. Write it down. Least, L-E-A-S-T, least drastic, D-R-A-S-I-C, least drastic mean is the same thing. Minimum impairment is very important. Minimum impairment is heart and soul. Fourth one is a proportionality effect. Proportionality effect. Okay. Yes, Bajwa sahab, first was Sir, sufficient important objective. Rajiv bhai, second was Sir, rational connection between objective and discrimination. third was Razia, third was Minimum impairment or least drastic mean. Khurram bhai, fourth was No personality effect. proportionality effect. Crown will prove. Now, just who is this guy? The legal provisional government. No, मेरा बेटा. First room, first 2 rooms for defense lawyer. Defense lawyer Okay. क्या करता है? जो डिफेंस करता है. डिफेंस लॉयर जो मुस्लिम लेडी के लिए आया हुआ है. रूम नंबर 1 फॉर डिफेंस लॉयर, रूम नंबर 2 फॉर डिफेंस लॉयर. डिफेंस लॉयर का मतलब है ही इज हियर बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट. Room number 2 is done. Defense first 2 rooms for defense lawyer is done. Now third room is for crown prosecutor. Mean मुझे अब अपने इस लॉ को सेव करना है. अगर सेव होता होगा तो करना, नहीं होता होगा तो नहीं करना. Make sense? So what was the first step? A Muslim lady are sufficient important is or what can be. Okay, now you are a crown prosecutor. I'm a judge. I'm a judge. You people are crown prosecutor in room number 3. Mr. Bajwa, what is your sufficient important objective? What is your objective? Must uncover your face in order to vote. What is your sufficient? Judge is asking, what is the sufficient important objective? You have to prove all 4 steps. If one of them could not establish, law would be struck down. Out. So what is your sufficient important objective? Why you are saying, why did you make a law? You are here behalf of the provincial government. Crown prosecutor, you are here behalf of the provincial government. What provincial government is sufficient important objective? What was her objective? Why is she gonna uncover her face in order to vote? What is your objective? Maintaining integrity of the election system. Very nice. ये कौन बोला? So मैंने बोला. Who? Rajiv, very nice यार. Very nice. Bajwa bhai. Sufficient important objective, crown prosecutor. आप कहेंगे भाई sufficient. I'm a crown prosecutor. Madam, sufficient important objective. We have to establish your ID to prevent the society from illegal vote. क्या पता मैं अपनी ID दे दूं. Behind the curtain मेरी बहन बैठी हो. Make sense? मैंने पाकिस्तान जाना है भाई. तो मैं को चल यार तू मेरी सहेली तू पकड़ दे आईडी तू जाके वोट डाल दे. So I'm a crown prosecutor. Sufficient important objective, ma'am. Sufficient important objective. You have to uncover your face in order to vote because we have to stop from illegal votes. That's why we are infringing your freedom of religion. Sufficient important objective. We have to establish your ID. कि गलत वोट ना पड़ जाए. एग्री और नॉट एग्री? Agree, sir. बाजवा साहब एग्री? Yes, sir. Agreed.
प्यार नाल एडी खूबसूरत तड़ी शक्ल है, तो प्यार नाल बोलो ना, ऐसा कहेंगे यस एग्री, एडे सीरियस Yes, होके sir. बैठे। सुरप्रीत बेटा, आप भी जरा शक्ल को मुस्कुरा के बैठे ना, इतनी टेंस होके क्यों बैठे हैं? अभी आप लोग मेरी इन पर्सन क्लास में नहीं आके बैठे, जब बैठोगे ना, ओए हो, यू विल एंजॉय अ लॉट, यू हैव नो आइडिया। है, बैरिस्टर सॉलिसिटर की क्लास लेता हूँ, कल बैरिस्टर की है, सॉलिसिटर की, ओए इतना एंजॉय करते हैं। ओके, क्राउन मैडम, sufficient important objective, you have to, sir, judge, sufficient, we have to, in order to vote, we have to establish our ID to prevent society from illegal vote, that's why we are infringing, infringe का मतलब है आपके राइट को हम, infringe का क्या मतलब होता है? infringing, Violet. वायलेट कर रहे हैं। Then second step was rational connection between the objective, what is objective, Rajiv bhai, Bajwa Sir, साहब? identification. Rational connection between the objective, objective is the same, to prevent Mental. society from illegal vote, which is rationally connected, connectivity हो गई ना? ठीक है खुरम भाई, Yes, sir. where we are right now? Sir, room number 3, point number 2. Point number 2, who am I right now? Crown prosecutor. Crown prosecutor. Rational connection between the objective, objective is again the same, to prevent society from Prevent society illegal from vote, illegal vote. rationally connected, connection है ना? हाँ जी। Yes, sir. आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इस पे, रेशनल कनेक्टेड की, इस यू विल एंजॉय अ लॉट। क्या, आई यूज टू ड्राइविंग अ ट्रक AZ, बिग ट्रक 16 व्हीलर, ठीक है, आई यूज टू ड्राइविंग अ 16 व्हीलर ट्रक। हम जॉब करते थे पर आवर, पर आवर। क्या होता था, पर आवर जॉब खत्म हुई है ना, ट्रक एम्प्टी हुआ, लीव दैट प्लेस। पर हम लोग क्या करते थे, घंटा 1.5 घंटा ना एक्स्ट्रा उठाते थे कि चल यार घंटे पाओ, घंटे पाओ। तो समझ आ रही है ना खुरम भाई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे डिस्पैचर ने मुझे कॉल की, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये एक अलग एग्जांपल है, सॉरी। क्या हुआ, 6 बजे शाम को, 6 o'clock इवनिंग, ऑनर ऑफ द कंपनी, आई आस्क ऑनर ऑफ द कंपनी, सर, आई एम नॉट गोना कैरी दिस ट्रक, आई एम नॉट गोना कैरी दिस ट्रक बिकॉज हेडलाइट इज फ्यूज, bulb is fuse, bulb is not working. So he said, Mr. Chaudhry, you can fix your light by yourself. I said, I don't know how to fix a truck light. You know what he said? Mr. Chaudhry, you don't know even how to fix a truck light? What kind of lawyer you are becoming? Someone told me you are becoming a lawyer. वो कोई रेसिस्ट टाइप बंदा था, उसने आके मुझे इंडियन का भी ताना दे दिया था। तो कहता है क्योंकि उस वक्त जंग चल रही थी, कहता व्हाट काइंड ऑफ लॉयर आर यू बिकमिंग अ लॉयर, इंडियन लॉयर, सो यू आर बिकमिंग अ लॉयर, you don't even know how to fix truck light. So what do you think, there was a rational connection? I'm becoming a lawyer and I must know how to fix a truck light, there was a rational connection? No. No, sir. No, sir. Why not? I said, Mr. John, you are telling me I'm becoming a lawyer and I don't know how to fix a truck light. There is no rational connection. Rational connection is, you can, okay, this is not a rational connection. If same question I'm going to ask, from Chief Justice Supreme Court of Canada, can you fix your car light? Probably he could not fix his car light, right? So can he say the same question? Hey, what kind of Chief Justice? You are Supreme Court Chief Justice of Canada, Supreme Court judge. You don't even know how to fix a car light? This is not a rational connection. Rational connection is rational. What can be rational connection? You can say that, Mr. Chaudhry, you have 10 years experience as a commercial driver. 10 years experience as a commercial driver. You don't even know how to fix a truck light. This is called rational connection. Or you can say that you are speaking broken English, rational connection. I don't know. Oh, Mr. Chaudhry, you are becoming a lawyer. You don't even know how to write an application.
रेशनल कनेक्शन। खुरम भाई राइट? देखिए मैं सज्जे खब्बे नहीं देखन दिंदा। यस सर। साडी भाभी आ गए ने हाँ, जी सर। देख लो। अब देखो ना, जो बिहाइंड द कंप्यूटर है, अब वो जो मर्जी करी जाए। अब उनकी मैं गारंटी नहीं देता, इम्तिहान के बाद भी नहीं देता। बड़े लोग आते हैं यार ये हो गया, मैं कहता हूँ यार अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपको जानता ही नहीं, दोबारा ट्राई। लेकिन जो बंदे फ्रंट पे आते हैं मैं उनके पर ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अब देखो, क्राउन प्रोसिक्यूटर सफिशिएंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव to prevent the society from illegal vote, which is rational connection. Room number 3, step number 2. Rational connection between the objective. Objective is to prevent society from illegal vote, which is rationally connected. Connection बन गया ना? जैसे हमारे बन गया ना, हाँ या ना में तो जवाब देना यार। Yes, यस सर sir. बन गया। Then minimum impairment. अब minimum impairment is very, very, very important. We have to look at minimum impairment mean. Minimum impairment mean law is rigid or law is lenient. Minimum impairment you can write in front of minimum impairment whether law is rigid or law is other options available, relaxed. Whether law is rigid, if law is rigid, must be struck down. If law is relaxed, then law will sustain. Sustain का मतलब है valid रहेगा, continue रहेगा. I'll give you what is the definition of rigid. Rigid mean, okay, in the question, ma'am, you have to vote, there is no other options available. There is no other options available. Law is rigid or law is relaxed? Khurram bhai. रिजिट सर। Rigid. Rigid. So law should be struck down or law should be sustained. सर स्ट्रक डाउन। Struck down. Sustain का मतलब है continue लगेगा. Struck down. अगर वो कहते हैं कि ठीक है यार कुछ some other options available है, मसलन वो कहता है ठीक है मैम in the question, तो if you don't want to show your face to the men, तो मैं वुमेन को ले आता हूँ। देखो ना, मैं तो आई एम ए प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैंने तो अपनी जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मुझे गाइडलाइन दी है मैंने तो उसी को फॉलो करना है। अगर मैं मुस्लिम भी होऊंगा तो मुझे जॉब ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि मैंने जॉब को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, राइट? सो गाइडलाइन, ओके मैम, डोंट वरी अबाउट इट, इफ यू डू नॉट वांट टू शो योर फेस टू मी, आई कैन हायर, आई कैन ब्रिंग A lady. वुमेन. इट मीन लॉ इज रिलैक्स्ड, the law will continue, law will sustain. Whole charter of rights are done. ऐसे ये स्ट्रक्चर को आपने करना है, ऐसे स्ट्रक्चर को करना है. Proportional effect, sir. Proportionality effect, don't worry about it, I'll explain later. Okay, sir. सर मेरा क्वेश्चन है। Yes, speak in English please. Sir, when we are on the room number 1, whether the charter applies to the body, just like in the same scenario, here the provincial representative, what we will answer it just like we start from the issue whether the charter apply to the body, or we directly say that because it is a provincial body, so that No. Charter. First, whether charter apply to the provincial government, Yes. whether charter apply to private body. If आप खुरम है, आपका नाम, आपका अपना घर है, yes, sir. you have a house. Yes, So I came to your office, I came to your home. Hey, you know what? I have to move in your basement. You said, oh, you are non-Pakistani. I'm not gonna allow you. You are a non-Muslim or non-Pakistani. I'm not gonna. Then I'll be upset. You are making a discrimination. Okay. I'm very upset. I'm gonna go to the court. Tell to the judge first whether charter apply to the private body. Okay. आपका तो ये प्राइवेट है, नॉट फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब एनसीए एग्जाम गुरु इज अ प्राइवेट बॉडी, मैं नहीं टीच करता लड़कों को, फिर तो ये आपने यूट्यूब का लेक्चर वॉच करना है, उसके सर बाद वो क्वेश्चन देखे मैंने जस्ट एक सिनेरियो में आई हैव टू कनेक्ट दैट when I raised the issue that whether the charter apply to the private body, then I came on the rules same, and then I apply the application because it is not came under the listed grounds, so I have to came on the exceptions and then आपने मेरे इंट्रो क्लास अटेंड की है, इंट्रो जो 4 घंटे की यूट्यूब की है? yes sir, मैंने वो attend कब की है? so last week. लास्ट वीक. सो देयर आर 3 एक्सेप्शन. Yeah.
charter only applicable to government action. Yes, sir. Okay, और there are two exception. कौन कौन सी exception है? सर उसमें दो एक्सेप्शन आ जाते थे कि नहीं अभी इस पे छोड़ें, अभी नहीं, अब अभी रेज ना करें, पीपल गोना बी कंफ्यूज. ओके, आई नीड योर आई कांटेक्ट. I need your eye contact. You must watch my intro class. There are exception. Private body through human rights code. You have to watch my. Okay. Now we're gonna solve one question. Just hold on. अब ये कौन पढ़ेगा? किसकी स्पीकिंग है बेटर? एक सेकंड ठहर जाए. एक सेकंड ठहर जाए. अब ये स्क्रीन ही ना खराब हो जाए. ओके, ये देखें. ये क्वेश्चन है, ये एनसीए का सैंपल क्वेश्चन है, एनसीए का. दिस क्वेश्चन इज अ एनसीए सैंपल क्वेश्चन. ये देखें, ये एनसीए का सैंपल क्वेश्चन है, एनसीए. दिस क्वेश्चन इज, कैन यू सी द स्क्रीन? Not yet, sir. शिट. एक सेकंड है जी. एक सेकंड यार, क्या करें यार. यार मुझे ना ये, आई हैव टू स्टॉप स्क्रीन, आई हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग. आई एम गोना गेट बैक टू यू, जस्ट वन सेकंड. So we came back after recording, मतलब after break यार. एक सेकंड है जाए. ठीक है. ओके, ये दिस इज एनसीए प्रिस्क्राइब बाय एनसीए. दिस क्वेश्चन, सो हु गोना रीड? कौन प्यारा खूबसूरत तरीके से वो पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता. नो वन डोंट वांट टू रीड. तो आप एग्जाम कैसे करेंगे अगर आप पढ़ ही नहीं सकते? तो कैसे एग्जाम लिखेंगे? सर मैं दीपिका आप पढ़ पढ़ सकती हैं? हाँ राजीव भाई. हाँ जी Yes, सर, पढ़ sir. सकते हाँ दीपिका आप पढ़ेंगी? Yes, sir. जी, sir. आपने ये पढ़ना है और गौर से पढ़ना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मेकिंग अ लॉ? सो रिमेंबर वन थिंग. ओके, ओके, बिफोर वी कैन रीड. एक सेकंड. So again, actually there was some technical problem. I cannot share the screen. तो ये कि just for 1 second, एक second. Again, I'm gonna stop recording. एक्सेप्ट है ना, तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो कब तक आएगा? बस अभी आ रहा है, मैं कॉल कर डिस्कनेक्ट कर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू. और मैंने ये स्टॉप रिकॉर्डिंग अगेन. सो वी केम बैक आफ्टर ब्रेक. रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस. दोबारा ट्राई करते हैं. देन आपसे मैं इजाजत चाहूंगा. कुछ नहीं कर सकते, ब्लेड तो नहीं ना मार सकते अपने आप को. यस, दीपिका, कैन यू रीड? Okay, sir. Uh, Bill C6, currently before the House of Commons, proposes to amend the Canada Election Act to require that voters reveal their faces before voting in person. Section 143 of the Canada Elections Act currently read as follows. Section 143, Clause 1. Each elector, on arriving at the polling station, shall give his or her name and addresses to the deputy returning officer and the poll clerk, and on request to a candidate. सर स्क्रीन हो गई ऑफ. फिर ऑफ हो गया. जी सर. चलो अब हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है ना.
Okay, sir. ठीक है, लास्ट टाइम ट्राई करके देख लेते हैं, एक सेकंड, फिर हम वी गोना स्टॉप। कैन यू सी? Yes, sir. अब लास्ट टाइम देन वी गोना फिनिश दिस क्लास। यस, Okay. So can I start? या प्लीज। Okay. Bill C6, currently before the House of Commons, proposes to amend the Canada Elections Act to require that voters reveal their faces before voting in person. Section 143 of the Canada Elections Act currently read as follows. 143 Clause 1. Each elector on arriving at the polling station shall give his or her name and address to the deputy returning officer and the poll clerk, and on request to a candidate or his. Sir, again हो गई बंद. So there was some technical error. So see you next class 4:30. Okay. Okay, sir. It's So again when same time Saturday 4:30. हो सकता है कि मैं आपको जल्दी भी क्लास ले लूं, हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे। I'm gonna you are in my Skype group, right? Yes, 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 sir. sir. हो सकता है मैं मे बी मंडे को ले लूं 7 to 10, मे बी ट्यूसडे 7 to 10 बिफोर Okay. नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो Thank you. मस्ट कीप इन टच विद स्काइप ग्रुप, Okay. Okay, sir. Thank you, sir. मस्ट कीप इन टच विद स्काइप ग्रुप। सो आई एम गोना ऐड, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये स्टिल आपने एंजॉय किया क्लास को, है ना? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग हो रही है अगेन। चलें अब देखें, बिफोर आई एम गोना फिनिश आई नीड टू आई कांटेक्ट। सो वी आर हियर फॉर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। I told you there are two parts of Canadian constitutional law. One is the Canadian Charter of Rights 1982 Division and of one is the division of power. Okay, whereby one is the division of power. So we're gonna discuss Charter of Rights. We're gonna discuss Charter of Rights. There are 6 sections divided into divided into 3 parts. 3 parts. Deepika, Yes, sir. आप भी मुझे आंसर देना, ये वेब आप भी आंसर दें हैं। Okay, sir. वेब कैन यू हियर मी? वेब कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? बाजवा, मिस्टर बाजवा, कैन यू हियर मी? सर इंटरनेट थोड़ा इशू आ रहा है सर, इसका थोड़ा ओके, नो प्रॉब्लम। अनक्लियर सी आवाज। दीपिका आपसे मैं Yes, sir. कॉन्स्टेंटली करूंगा, ठीक है? सो Okay, sir. ओके, सो 6 parts. One is whether charter of section 32, whether charter apply to the body. Second one is Deepika, second one is Freedom of religion. 2A, freedom of religion. Yes, sir. And freedom of expression. 2B, freedom of expression. 2B, sorry, yeah. And after that, section 7, life, liberty, and Okay. security. आगे भी तो बोलो ना मेरा बेटा, Yes. मेरा बॉडी लैंग्वेज समझ आती Okay, है कि okay. कोई नहीं? मतलब मैं यहाँ Okay, पे okay, स्टक sorry, हुआ sir. हूँ तो मेरे बॉडी No, बॉडी okay. लैंग्वेज Life, liberty, and security, and it has to be accordance with principle of fundamental justice. And section 15, everyone is equal before the law. ठीक है, रूम नंबर Yes. 3। Sir, that I don't know. Sorry. Where the law is justified under section 1. यही तो फर्क पड़ जाता है कि जो बिहाइंड द कंप्यूटर है। अब देख लें कि मैंने अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर Okay, ही, sir. Yes. Whether law is justified under हाँ नहीं section मुझे सुन 1. रहा Yes, sir. देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी एडमन की क्लास में भी मैंने दिखाया था, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हैं? अगर आप कॉन्स्टी में इफ यू आर नॉट गुड एट एडमन लॉ, इन माई, मैंने क्लास में बताया था, तो ये देख रहे हैं ना, ये पब्लिक लॉ इज गोना कम अंडर बैरिस्टर। ठीक है, ये देखें, अगर आप अभी से आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Division of powers. डिवीजन ऑफ पावर। अगर आपका अभी से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आप बैरिस्टर में फंस जाएंगे, और Yes, sir. बैरिस्टर में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैंने इतने लंबा लेक्चर दिया है, अगर आपको ये नहीं पता तो फॉर श्योर, ओके, कैन यू रीड?
Deepika, can you read? What is bound? Sorry, who What is is- bound? Sorry. Who is Can you bound? read? The charter applies to government actions as opposed to private action, while Parliament and the provincial चलो, legislature. ठीक है, अब देखें who is protected. 4.1, can you read 4.1? 4.1 Freedom of thought and expression. Section 2 of the Charter read as follows. Everyone has the following fundamental freedoms. A. Freedom of concise and religion. B. Freedom of thought, belief, opinion, and expression. A to B, 2A to B is done, right? Right? Yes, sir. ठीक है, और फिर ये सेक्शन 7 ये पढ़ें, ये क्या है? Life, liberty, and security of the person. And Section 7 of the Charter read as follows. Everyone has a right to life, liberty, and security of the person, and the right not to be deprived thereof, except in accordance with the principle of fundamental justice. ठीक है, अब देखें ये अगर अभी आपका क्लियर नहीं होगा तो आप फंस जाएंगी। अब देखें यही तो है ना, बिहाइंड द कंप्यूटर, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस एटीट्यूड के साथ, इस विद दिस सेम एटीट्यूड यू विल नॉट गोना क्लियर बैरिस्टर आंसर। मेरा थंब रूल है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ठीक है, दोबारा ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? Section 1 of the Charter, after a limit or infringement of a charter right or इससे भी freedom छोड़ is रहे हैं, found. पहले एक सेकंड, पहले ये पढ़ें ये। Equality rights. Section 15 of the Charter read as follows. Every individual is equal before and under the law and has a right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination, and in particular without discrimination based on race, national or ethnic origin, color, religion, sex, age, or mental or physical disability. ठीक है, आप देखें ये Subsection 2. Yes. सब सेक्शन को भी छोड़ें। ठीक है, ये अब बैरिस्टर की क्लास का मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, ठीक है, सेक्शन 15 हो गया। अब देखें आप ओक टेस्ट किधर है। जस्ट 1 सेकंड। क्या लिखा है? Section 1 Defense. सेक्शन 1 का डिफेंस का ये क्या लिखा है? Legislative objective. सफिशिएंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या लिखा हुआ है? Rational connection. ये क्या लिखा हुआ है? Minimal impairment. इम्पेयरमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप क्या लिखा हुआ है? Whether benefits are proportional to deleterious effects. देखें, अब मेरा क्या आपका बताने का पर्पस है, ये है बैरिस्टर की किताब। अगर आप इतना मेरा खूबसूरत स्ट्रक्चर बताया, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बताया, कोई एटलीस्ट इतना अच्छा स्ट्रक्चर इस दुनिया में कोई नहीं आपको बता सकेगा, गारंटी है। अगर इसके बाद भी अगर आपका बेस ही अच्छी नहीं बनी, बिलीव मी और नॉट, यू विल नॉट गोना पास बैरिस्टर। मैं नाराज नहीं होना मेरे से दीपिका और रजिया। आई नीड योर आई कांटेक्ट। दीपिका, आई नीड योर आई कांटेक्ट। दीपिका, Yes, sir. okay, I need your eye contact. So charter of rights, whether charter apply to the body, what right is going to be infringed, whether crown prosecutor room law is justified under section 1, sufficient important objective, rational connection between the objective, minimum impairment and proportionality effect, right? Yes, sir. हाँ, ये चारों याद रखने हैं। अब देखो सब, अब I'm a crown process, Muslim woman was okay. One more only from Deepika. Deepika, Okay, sir. Okay, sir. Yes. सिटी बाय लॉ, सिटी बाय लॉ। खुरम भाई मैं आपसे भी पूछूंगा, सिटी Yes, sir. बाय लॉ, सिटी बाय लॉ, नो वन गुना ये क्या कहते हैं, साइन बोर्ड नॉट मोर देन 3/3। सिटी बाय लॉ इन मिसिसागा इज मेकिंग अ लॉ, यू कैन हैव वो क्या कहते हैं, साइन बोर्ड in major intersection not more than 3/3, which is this one, 3/3. No one gonna have ये क्या कहते हैं, दीपिका मेरा कवर किया करो ना आप लोग। क्या है ये? Signboard.
Signboard. Signboard. Signboard not more than 3 by 3 by 3. 3. 3 by 3. What happened? My signboard was 6 by 6. 6 by 6. Okay. 6 by 6. City came here, look at my number, and they give me a ticket. They give me a ticket. Ticket. So I was very upset. I was very upset. I said, my constitutional rights are going to be infringed. So ये बताएं कौन सा right infringe हो रहा है? Freedom of, Speaker huh? freedom of expression, sir. Expression. Expression, not freedom of religion, not section 7 life. My life is not in danger, my liberty is not in danger, my security is not in danger. My section 15 only to be freedom of expression. Now I'm gonna go to the court. Judge, defense lawyer, crown prosecutor. First question is, Deepika, whether charter apply to Body. City. City. Shabash. Ab maza hai na. Whether charter apply to the city, you have to watch my intro class from Deepika. YouTube. Then, Khurram bhai, what right is going to be infringed? Section 2B, freedom of expression. Just we're gonna tell to the judge. I know some expression have okay. For example, some expression in violent form doesn't cover under the 2B. For example, if I'm gonna say this is also expression, but in a violent form, doesn't cover under the 2B. Doesn't cover under 2B. I know some activity does convey a meaning in violent form. Doesn't cover under 2B of the freedom of expression. But my activities, just having a signboard which is more than 3 by 3, which is a 6 by 3, only to promote my law office. Only to promote my law office. And there was a severe limitation on my freedom of expression by the by a city imposing a ticket. There was a severe limitation on my freedom of expression by imposing ticket from the provincial government, right, Deepika? Yes, sir. अब मैंने इतना सा बता दिया, 2B is done. मैंने कहा था भाई freedom of expression, I know judge, same time we gonna write in the exam. Some expression contemplate within the provision which do entail violence. Violence का मतलब है Muslim people are terrorist, Hindu people are terrorist, Sikh people are terrorists, Indian people are terrorists, Pakistani people are, black people are terrorists. These people are bad. These are violent form, doesn't cover under 2B. There is no protection. But in the given, so I know you're gonna write in the exam, same time you're gonna tell to the judge, some expression contemplate within the provision which do entail violence, not cover under 2B. But in the given scenario, my activity is just to promote my law office in a non-violent form. And there was a severe limitation on my freedom of expression by imposing Deepika. Deepika? Yes, sir. By imposing, there was a severe limit. I'm telling to the judge, room number 2, I'm telling to the judge, there was a severe limitation on my freedom of expression because if I'm having a sign 5 by 5, severe limitation given from the city. Which severe limitation on my freedom of expression? Imposing a fine. Deepika? Sir. Fine, मेरा बेटा fine ना? Yeah. Fine. Severe limitation. मेरे ऊपर limit कर रहे हैं freedom of expression, मेरे right को दबा रहे हैं, limit कर रहे हैं by giving me a ticket, by giving me a jail. Make sense? Yes, sir. परेशान नहीं होना दीपिका बेटा. I'm not gonna leave you alone. बेटा लॉयर तो मैं तुम लोगों को बना के ऐसी की तैसी यार, लॉयर तो मैं बना के मेरा साथ दो तो लॉयर तो बनाऊंगा बाय ऐसी की तैसी. ठीक है? Yes, sir. हाँ, ओके दीपिका, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, सो आपने कॉल करनी है मुझे आफ्टर द क्लास. कॉल मी. Okay, sir. Deepika must call me. Okay, Then sir. 2B done. Then third room is Khurram bhai, third room is for Whether the law is justified under section 1. now we are crown prosecutor.
First step is for Crown Prosecutor Deepika. First step is third room. First step is Sir, Deepika. sufficient important objective, Okay. sorry. Okay, I need your eye contact. Foram bhai, Mhm. I'm here behalf of the city Crown Prosecutor. We allow only 3 by 3. 3 by 3, not 5 by 5. What was the sufficient important objective? Judge is asking from you people. I'm a judge. I'm asking from Crown Prosecutor. What was their sufficient important objective? Only 3 by 3, not 5 by 5. In any major intersection, signboard, not more than 3 by 3 in any major intersection. What was the sufficient important objective? Sufficient Deepika. objective was, Yes, Furam bhai. yes. So sufficient objective was that because taking the intersection, there is the 3 by 3 is taking the less space, so it's easy for the traffic. We need a visible. देखो ना, अगर 5 by 5 होगा तो मैंने लेफ्ट पे देखना है, I have to go. तो हाईली चांस के एक्सीडेंट इन्वॉल्व हो सकता है, राइट दीपिका? Yes, sir. Yes, sir. देखो ना, मैं इंटरसेक्शन, आई एम स्टैंडिंग इंटरसेक्शन, लेफ्ट साइड में, ओ माय गॉड, देयर इज अ साइन बोर्ड, देन आई हैव टू गो. उन्होंने पूरी स्टडी करके 3 by 3 किया ना. सफिशिएंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, क्योंकि उस साइड को विजिबल होना चाहिए, इसलिए 3 by 3. अगले बंदे 10 by 10 डाल दें, 6 फुट का डाल दें, 10 फुट का डाल दें. मेक सेंस? Yes, sir. Sufficient important objective. That's why being a crown, we are limiting your charter of rights. Second step is Deepika. Sir, rational connection between objective and discrimination. Same objective. Rational Yes. connection between the objective And discrimination. is to prevent society from accident, because Accidents. it has to be which is racially connected. So minimum impairment. What is minimum impairment? Yes, Khurram bhai. Sir, whether law is rigid or law is flexible. कि मुझे एग्जांपल दें, ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, क्या इन द गिवन 3 by 3, सिंपल 3 by 3. So it's a rigid. Rigid. Not more What than, is- yes. Yes, Khurram bhai. Yes, Razia. Yes, Rajiv bhai. What do you think? Law is rigid or law is lenient? 3 by 3, only 3, not more than 3 by 3. It's rigid, sir. Rigid. Yes, Rajiv bhai. I can't hear you. Rigid, sir. It's only Rigid. one option. 3 by 3 itself is a minimum impairment. आपको 3 by 3 दे तो रहे हैं. कौन सा कंप्लीट बैन कर रहे हैं? We are not completing the ban. Still you can have signboard any in major intersection only 3 by 3. Still publicity तो कर ही रहे हैं ना आप लोग. तो रिजिड कहां से? रिजिड आके टोटल बैन. मेक सेंस? Yes, sir. देखे ना, वो कह रहे हैं कि हम टोटल बैन तो नहीं ना कर रहे, तो भाई लेस बैन. तो अब ये मेन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंक्लूजन डजंट मैटर. कंक्लूजन डज नॉट मैटर. देखो रजिया, आपने मेरी क्लास अटेंड की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, उसमें देखो वेबिलो फेडरल कोर्ट पे क्या, ही लूज द केस इन फेडरल कोर्ट, देन ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ अपील, ही विन द केस, देन अदर पार्टी क्राउन प्रोसिक्यूटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, he lose the case, he win the case, lose the case. In Supreme Court, 9 judges, 5 gonna say law should be struck down, 4 gonna say law should be sustained. So what do you think? Minority judges gonna be fail in NCA exam? Sometime, for example, trial judge is saying law should be struck down. Half are saying struck down, majority is not struck down. Next court, half. Next court, 3 judges saying yes, 5 judges say no. Federal court, 5 judges saying law should be struck down, 4 judges is saying no. So, higher court, Supreme Court judge, there is no unanimous decision in any court, less than 10%. Everyone has. The main point is, Rajiv bhai, main point is 9 judges, everyone has his different result. The point is, whenever you're gonna write the exam within the structure, read before the exam within the structure. Whenever you're going to read my notes within the structure, whenever you're going to write in the examination hall within the structure, do not departure then read, do not departure then write the exam.
तो जितने भी जजेस थे ना वो विद इन द स्ट्रक्चर ही बोलते थे। कुछ लोग जजेस कह देते हैं कि यार लॉ को सेफ होना चाहिए, कुछ सम जजेस लॉ शुडंट बी सेफ। So what do you think? So the point is conclusion does not matter. What does matter? Structure. Structure. What is structure? Whether charter apply to the body. Body can be federal government, provincial government, private body, through human rights court, through YouTube. What right is going to be infringed? Okay, freedom of religion, freedom of expression, Life, section liberty, 7 security. or Section 15. Then whether law is justified, sufficient, important, objective, rational connection, minimum impairment, proportionality fact. This is called within the structure. Read within the structure. I'm gonna teach you how to read. देखो ना 25 today I teach 2 hours. I thought मैं more than 2 hours I'm gonna teach. 2 questions को solve करना था, अब नहीं हो रहे, अब क्या करूं? I thought we gonna in next class maybe Monday night 7 to 10, maybe Tuesday night 7 to 10, maybe I don't know which one. तो हम उसमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दीपिका आपने सॉल्व करने हैं। ओके सर। क्या मैंने बोला? सर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ ठीक है, अब आपको ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो ना अब इस तरीके से, इफ टू ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ओके वेदर चार्टर अप्लाई टू द बॉडी माई फ्रीडम ऑफ रिलीजन Hindu is an established religion. There was a nexus with religion. Islam is an established religion. There was a nexus in religion. It can be unique to the claimant. That's my personal belief. I have a sincere belief on my religion. और वो मुझे स्टॉप कर रहे हैं। Then sufficient important objective, uncover your face because we have to establish your ID, which is racially connected. Minimum impairment, maybe some other options available or not too available. Make sense? यस सर। Yes, sir. खुरम भाई एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यार आपके चेहरों पे वो आ नहीं रही, इंजॉयमेंट नहीं आ रही यार, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रजीब भाई मुझे लग रहे हैं तगड़े, ये राजीव भाई मुझे लग रहे हैं सचिन तेंदुलकर के रिश्तेदार हैं। खुरम भाई एंजॉय आप लेकिन एंजॉय कर रहे हैं ना? Yes, sir. ये स्ट्रक्चर है। इन नेक्स्ट क्लास स्पेशल क्लास फॉर दीपिका खुरम, ऑफ कोर्स सबके लिए क्लास होगी, मैंने मेन पॉइंट करना है दीपिका एंड खुरम। Okay, sir. ओके सर। आप दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ठीक है। आपने ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास इज दैट ओके? Okay, sir. हाँ जी, sir. यस सर। सर मेरा एडमिन अब का एग्जाम दीपिका आपके कोई स्ट्रक्चर आपने में एंजॉय किया? यस सर। अच्छा हाँ जी, आप देखा ना दिल से वो आवाज निकली है। सर जी मेरा रजीब भाई, मेरा एडमिन का एग्जाम आपने जो स्ट्रक्चर सिखाया था उसने क्लियर करवाया। अच्छा पास हो गया एडमन? हाँ जी सर, एडमिन आपसे बात हो रही है। यार मेरे से तो मैं सारा दिन फोनों पे रहता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, हाँ जी मैं सर। भूल सर जाता हूँ। सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि पास हो जाऊंगा, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने उसी को फॉलो किया और ये देख लें। उसी वजह से मुझे खुद उम्मीद नहीं थी सर मैंने, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर तो आगे वही बदल मैं गया। कहता हूँ यार, डजेंट मैटर यार, आपको मैं फिर बता रहा हूँ यार, मेरी आंखें नहीं आपको बताती ये बंदा कितना फ्रॉडिया है, बताती हैं कि कितना ये बंदा फ्रॉडी है, कितना सिंसियर है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। जो बंदा खुद कहता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ या मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं नहीं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आपको मुझे खुद देखना है कि बंदा कितना फ्रॉडी है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है। कोई इतनी बातों में इसकी सच्चाई है, कितनी बातों में इसकी नहीं सच्चाई। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। तो ये है कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यार आपके पैसों का मैं ग्रेडी नहीं हूं, मुझे आपका भविष्य चाहिए, फ्यूचर चाहिए। यू पीपल लाइक माई चिल्ड्रन। एक भी बच्चा फेल होता है मुझे तकलीफ होती है, 100 बच्चे पास होते हैं, बाप का एक भी बच्चा पीछे रह जाए। यार मेरे 3 भाई थे, वन ऑफ देम, दोनों भाई टॉपर टॉपर, मैं बचपन से नलायक, तो मेरी माँ को तकलीफ होती थी कि यार एक 100 बच्चे भी लायक हो जाए, एक बच्चा रह जाए ना, माँ उसी के साथ ही होती है। तो मेरा दिल करता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस वक्त भी हैं एक्चुअली। तो अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने आपके सामने टिक टिक करूं, लेकिन हमें करना है आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहता हूँ यार 1 साल का मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, क्या होगा 2 सालों में पास हो जाएंगे, 3 सालों में हो जाएंगे। तो पिछले 3 साल का पता चला ऐसे ही गुजर गए। ये जो यावियां मारनी है, ये चाचे ताए मामे नंद सास ससुर,
ये दोस्तों के एक बात याद रखना, मोस्ट यू विल लव, मोस्ट यू विल हर्ट फ्रॉम दैट पर्सन। ये बात याद रखना, जितना ज्यादा आप करो दोस्तियां, खत्म कर दो दोस्तियां, अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप से। अगर इफ यू, अगेन आई एम टेलिंग यू राइट हियर, जस्ट चले मैं 7 o'clock क्लास विल फिनिश, ये इस वेरी इंपॉर्टेंट है राजीव भाई, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मोस्ट यू विल लव, मोस्ट यू विल हर्ट, याद रखना। जिससे जितना ज्यादा प्यार करोगे, उसने उतने ज्यादा आपको तकलीफ देनी है। तो प्यार एक्सेप्शन क्या है? लव योर एजुकेशन, एजुकेशन रिवर्ट यू बैक 10 times। ऐसे ही है ना? अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन मिल जाती है ना, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, फ्रॉम हस्बैंड, फ्रॉम वाइफ, फ्रॉम चिल्ड्रन, फ्रॉम फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेवर एवर आंसर फ्रॉम द टंग। अब फ्रस्ट्रेशन आ गई है ना, गुस्सा चढ़ा है, कन्वर्ट इनटू एनर्जी, पुट दैट एनर्जी इनटू योर एजुकेशन। और वन डे आप एजुकेशन पे जब करेंगे ना, तो वो आपका पैशन बनता जाएगा। वन डे दैट पैशन गोना टर्न इनटू योर प्रोफेशन। आप थकेंगे ही नहीं, फिर आपको जीने का मजा आ जाएगा। और जाते जाते एक एडवाइस 5 चीजों की, लाइफ चेंजिंग। डेली एक्सरसाइज, इफ नॉट वीक में 3 दिन, आधा आधा घंटा डेली एक्सरसाइज। हेल्दी फूड, अगर नहीं खानी हेल्दी फूड, वीक में 1 दफा। मतलब हम पैसे स्पेंड भी करते और जहर खाते हैं। हेल्दी फूड मतलब पैसे स्पेंड करके जहर खाते हैं, बाहर के खाने मिर्च मसाला वाले। घर में सब्जियां खाएं, चाहे गोश्त खाएं, लेस घी। क्या पहला बताया? हेल्दी, डेली एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, लेस स्ट्रेस और नो स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस है? अगर स्ट्रेस आता है ना, इमरजेंसी वार्ड चले जाया करो। क्या स्ट्रेस है? बाल है, छह नाक है, कान है, हॉस्पिटल जाके देखो कितने लोगों में स्ट्रेस है। मैं जाता हूँ रिहैब सेंटर, इधर क्रेडिट वैली हॉस्पिटल चले जाओ, मैं जाता हूँ, लोगों को मौत की दवाएं मांग रहे हैं यंग बच्चे। ये स्ट्रेस है। बच्चों, माँ के छोटे छोटे बच्चे फौत हो गए, बच्चों के माँ बाप फौत हो गए, किसी के बहन भाई फौत हो गए, कुछ हो गया, ठीक है? तो लिहाजा लेस स्ट्रेस करें, शुक्र अदा करो। दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान वो है जो अपनी किस्मत में खुश नहीं है। सिंपल तब रोल है। आज कनाडा का वीजा ओपन हो ना, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए 1 अरब बंदा यहाँ पे आ जाए, 1 अरब बंदा, तो इसका मतलब हम 1 अरब बंदों से ज्यादा किस्मत वाले हैं, ठीक है? फोर्थ वन पता नहीं क्या है, फोर्थ वन भूल गया। डेली नॉलेज, डेली नॉलेज 2 घंटे का, डेली नॉलेज फ्रॉम योर हार्ट। और लास्ट वन इज अ लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, never ever expect anything from anyone including your family member. You are not only the luckiest person in the world, you will be the luckiest person in the earth अगर आपकी expectations नहीं है। The most you expect, most you will hurt from that person. खत्म कर दो एक्सपेक्टेशंस, अपने ऊपर वर्कआउट करो। कोई आपको जलील कर रहा है, नेवर एवर आंसर फ्रॉम द टंग, उसी को कन्वर्ट करो एनर्जी में, पुट दैट एनर्जी इनटू योर एजुकेशन। वक्त बताएगा। भाई मैं ग्रेड 1 में फेल, 5वीं में फेल, मैट्रिक में फेल, एफए में फेल, बीए में फेल, एनसीए में फेल, आज तक मैं बैरिस्टर में पास नहीं हो सका, सॉलिसिटर में नहीं हो सका। तो ये वेब पढ़ा, इसकी बहन मेरे से सॉलिसिटर पढ़ रही है, पूछो कितने बंदे बैठे हुए हैं। क्या वजह? डिटर्मिनेशन, पैशन, जुनून, जज्बा, जोश। मंजिलें उन्हीं को ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, हिम्मत, जोश, जुनून और जज्बे से उड़ान मिलती है। नहीं है तेरा नशेबंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू ईगल है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।